गुड इवनिंग एवरीवन। आज है 26 जून और वीकेंड मार्केट स्ट्रेटजी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वीकेंड मार्केट स्ट्रेटजी के अंदर में आई ट्राई टू रिकॉर्ड व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट राइट नाउ एंड व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट अ वीक कमिंग फॉरवर्ड। तो फटाफट चलते हैं, स्क्रीन शेयरिंग करते हैं। एक छोटा सा वीडियो का बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, so let's do the screen sharing and see where the market is. So this is the broader market. So look at the dollar index, it is trading below 105. तो last weekend में जो मैंने weekend record किया था उसमें मैंने mention किया था कि that if dollar index stays below 105, that means it's positive for the market. So last week market ने एक positive direction में closure दिया है and ये जो लक्ष्मण रेखा लेवल है which is 15,670 to 15,800 ish. तो ये जो लक्ष्मण रेखा है इसको मार्केट अगर क्रॉस करेगा तो एक शॉर्ट टर्म मार्केट में रैली दिख सकता है टिल 200 डे मूविंग एवरेज which is around these levels 16,600. So as we can see that dollar index is still trading 105 के नीचे, तो चांसेस है कि इस लक्ष्मण रेखा को मार्केट क्रॉस करेगा and my next level important level for market will be 16,600. तब तक I think short term market के अंदर में एक bullish momentum आ सकता है, but will that lead to long term bullish pattern? Well ये जो 200 डे मूविंग एवरेज है, I think this is a circumstance. तो ये 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर में किसी भी वीक में अगर क्लोज देगा, I think that's where we have to consider market to be positive. फटाफट देखते हैं 10 year yield वगैरह क्या कर रहा है. So this is US 10 year yield again correcting a bit. 2 year yield तो ये हमेशा ही होता है कि जब 10 year yield नीचे जाएगा मतलब इन्फ्लेशन पे एक मॉडरेशन की बात हो रही है और that's why dollar is also going down and that's why emerging markets or risky assets is going up. So overall last week has been kind of a consolidation and recovery week. इस वीक में हमको देखना है कि वो जो क्रिटिकल लेवल्स है जिसका मैंने बात किया है, whether market is able to withhold that critical levels or not. Talking about Bank Nifty, तो last weekend strategy में मैंने कहा था कि Bank Nifty is looking far stronger than Nifty. So let us see the 15 minutes chart of these four indices, so Nifty, Bank Nifty, Mid Cap and Small Cap. So clearly all four indices are suggesting that market is bullish, at least short term में, क्योंकि 15 मिनट चार्ट देख रहा हूँ मैं, तो I will consider short term के अंदर में एक bullishness as an indication. तो looks like market is here to remain bullish in the immediate term. लॉन्ग टर्म के अंदर में अगेन 200 डे मूविंग एवरेज बताएगा कि मार्केट में क्या हो रहा है. स्टॉक स्पेसिफिक लॉट ऑफ मोमेंटम एक्टिविटी इज हैपनिंग. इफ यू गो टू web.stockis.com now it's a time to look at momentum strategies. तो अगर आप strategies में जाते हैं यहाँ पे and you look at strategies like swing bullish strategy, तो यहाँ पर ईगल स्ट्रैटेजी जो है, आई थिंक इट्स टाइम नाउ टू प्ले ईगल स्ट्रैटेजी. और यहाँ पर जो जो स्टॉक्स नजर आएंगे चांसेस है कि उनके अंदर में मोमेंटम है. दूसरा, अगर मैं उसको सिंप्लीफाइड कर सकूं स्कैन को, सो गो टू स्कैन, गो टू प्राइस स्कैन और 52 वीक ब्रेकआउट स्कैन. तो जो जो स्टॉक अपने 52 वीक हाई या 52 के रेंज में एंटर कर रहे हैं, these are good enough stocks for you to look at from a swing trading perspective. So जो stockage के users है, they can use this beautiful feature of stockage to find out stocks जिसमें काम कर सकते हैं. मैं अपने stock identify करता हूँ and accordingly I play momentum. So good time to play short term momentum in the market. 2 hourly chart को use करके आप short term momentum play कर सकते हैं. And if market crosses above 200 moving average, you can keep the market view for a longer period of time. Thank you so much for watching this video and I hope you will have a great trading week ahead. Bye-bye.